नेक्स्ट क्वेश्चन, मिसेस कृपा विश्वा कंपनी हैज फॉलोइंग प्रोजेक्ट अंडर कंसिडरेशन। तो एक कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखा है। देयर डिस्काउंटिंग रेट इज 25%, उनका कॉस्ट ऑफ कैपिटल दे रखा है। यू आर रिक्वेस्टेड टू कैलकुलेट payback period of the project, discounted payback period of the project, profitability index या उसको desirability factor भी बोला जा सकता है या उसको benefit cost ratio भी कहा जा सकता है। NPV index, ईयर 0 इन्वेस्टमेंट करना है 10,000 रुपए का, ईयर 1 to ईयर 3 इतना कैश इनफ्लो मिलेगा। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर हमको रेडीमेड दे रखा है 25% का। फर्दर यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइस whether the project should be accepted in each of the case। तो हर एक डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया में आपको ये डिसाइड करना है कि क्या प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। प्लीज गो थ्रू द क्वेश्चन ऑल ऑफ यू। Let us have understanding of a term that is given a name as payback period। सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन का आंसर कैसे किया जाएगा। देखो जैसे कि नाम बताता है पेबैक पीरियड, इसका मतलब ये है इट इज इंडिकेटिंग द टाइम पीरियड इन विच यू आर एबल टू रिकवर द इन्वेस्टमेंट दैट यू हैव मेड इन द प्रोजेक्ट। पेबैक पीरियड क्या बताता है कि कितने टाइम पीरियड में हमने हमारा इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट में से रिकवर किया है। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं ये प्रोजेक्ट में हमारा इन्वेस्टमेंट कितना है, ये प्रोजेक्ट में हमारा इन्वेस्टमेंट है 10,000 रुपए। ये प्रोजेक्ट का कैश अक्रूवल कितना है, फर्स्ट ईयर में हमको मिलेगा 6,000, सेकेंड ईयर में मिलेगा 7,000, थर्ड ईयर में मिलेगा 8,000। दिस इज द कैश फ्लो ना। ये कैश फ्लोस है ना, उसके बेसिस से हम लोग कैलकुलेट करेंगे क्यूमुलेटिव कैश फ्लोस। यानी बाय एंड ऑफ ईयर 1 हमने क्या रिकवर किया 6,000 रुपए, बाय एंड ऑफ ईयर 2 हमने क्या रिकवर किया 13,000 रुपए, बाय एंड ऑफ ईयर 3 हमने क्या रिकवर किया 21,000 रुपए। सो दिस इज द अमाउंट दैट से वी आर एबल टू रिकवर by end of year 1, by end of year 2 and by end of year 3। ऐसा हम लोग समझते हैं। अच्छा, हमने इन्वेस्टमेंट कितना किया है 10,000 रुपए। तो हम लोग ऐसा लॉजिकली समझ सकते हैं कि ये जो हमारा पैसा है वो हमने 1 साल के बाद और 2 साल के पहले रिकवर किया है। Why? Because 10,000 rupees is falling between 6,000 and 13,000। तो एग्जैक्टली हमारा पेबैक पीरियड क्या है, तो उसके लिए हम लोग कुछ ऐसा बोल सकते हैं। लिसन केयरफुली, दैट से वी आर एबल टू रिकवर द इन्वेस्टमेंट इन 1 ईयर प्लस। प्लस कैसे लिखेंगे मैं आपको समझाता हूं। देखो हमने इन्वेस्टमेंट कितना किया है, हमने इन्वेस्टमेंट किया 10,000 माइनस हमने रिकवर कितना किया है बाय एंड ऑफ ईयर 1 हमने रिकवर किया 6,000 डिवाइडेड बाय वी अंडरस्टैंड दैट से 4,000 रुपए का कैश फ्लो रिकवर करने का बाकी है, 4,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट रिकवर करने का बाकी है। दैट इज सपोज टू बी रिकवर्ड फ्रॉम द सेकेंड ईयर कैश अक्रूवल। यानी क्या होगा 1 ईयर प्लस इन्वेस्टमेंट माइनस क्यूमुलेटिव कैश फ्लो टिल फर्स्ट ईयर। क्यों? क्योंकि यहां पे फर्स्ट ईयर लिखा है, डिवाइडेड बाय कैश फ्लो फॉर द सेकेंड ईयर। ऐसा किया जाएगा। यानी हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि 4,000 रुपए का हमारा इन्वेस्टमेंट जो अभी रिकवर करने का बाकी है वो हम लोग सेकेंड ईयर के कैश अक्रूवल से रिकवर करेंगे। पूरे सेकेंड ईयर का कैश अक्रूवल कितना है 7,000 रुपए, पूरे 7 दैट इज द सेकेंड ईयर का। सो 4,000 डिवाइडेड बाय 7,000 इज इंडिकेटिंग फ्रैक्शन ऑफ द सेकेंड ईयर जिसमें हमारा बाकी का पैसा रिकवर हो जाता है।
So use your calculator. 4 upon 7, 0.5714. So 1 year plus 0.5714. So 1.5714 years is the payback period. This is the way the payback period is calculated. Now यही चीज को हम लोग मंथ्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो फ्रैक्शन ऑफ द ईयर है उसको अगर आप चाहे तो मंथ्स में कन्वर्ट कर सकते हो। पूरे साल में कितना महीना है? 12 महीना। सो यूज द कैलकुलेटर। 0.5714 इंटू 12 तो 6.86, यानी आंसर क्या होगा? 1 ईयर एंड 6.86 months. This is the payback period that we have of the project. ऐसा इसका कैलकुलेशन किया जाएगा। Now before we discuss कि डिसीजन कैसे लिया जाएगा, I have a small question to you. ये जो क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपए है, उसकी जगह फॉर एग्जाम्पल ऐसे मैं बोल रहा हूं, इन्वेस्टमेंट होता 17,500, सपोज इन्वेस्टमेंट होगा 17,500। आई वॉन्ट यू टू राइट इन द चैट बॉक्स कि हमारा पेबैक पीरियड उस केस में क्या होता। देखो हमारा इन्वेस्टमेंट कितना है? 17,500, ऐसा मैंने हाइपोथेटिकली बताया आपको। तो हमको क्या देखने का फ्रेंड्स, ये पैसा हमारा कब रिकवर होता है? ये पैसा हमारा रिकवर होता है 2 साल के बाद और 3 साल के पहले। सो हमारा पेबैक पीरियड क्या होगा? ग्रेटर देन 2 years बट लेस देन 3 years। तो हम लोग क्या लिखेंगे फ्रेंड्स? 2 years से हमारा फॉर्मूला शुरू होगा, प्लस क्या? इन्वेस्टमेंट है 17,500 माइनस सेकेंड ईयर तक हमने कितना रिकवर किया? 13,000 रुपए। सो रिक्वेस्ट यू टू यूज अ कैलकुलेटर। 17,500 माइनस 13,000, कितना पैसा रिकवर करने का बाकी है? 4,500। हमारा थर्ड ईयर का कैश अकाउंट कितना है? 8,000 रुपए। सो डिवाइडेड बाय 8,000। सो रिक्वेस्ट यू टू यूज अ कैलकुलेटर कि 4,500 डिवाइडेड बाय 8,000, दैट इज इंडिकेटिंग द फ्रैक्शन ऑफ द थर्ड ईयर जिसमें हमने बाकी का पैसा रिकवर किया है, दैट इज प्लस 0.5625। ये 2 साल को कॉमन ही रहेगा, तो आंसर क्या होगा? 2.5625 years. This is the way we are required to write answer. And if at all we convert this 0.5625 into number of months, it is 6.75 months. तो इसको अगर हमको लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हैं 2 years and 6.75 months, ऐसा भी हम लोग आंसर लिख सकते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, हमारा पेबैक पीरियड तो हो गया, इट इज 1.5714, ठीक है ना। वो 17,500 वाला तो सिर्फ समझने के लिए था। तो हमारा पेबैक पीरियड का आंसर आ गया, इट इज 1.57 years, यानी दैट इज द टाइम पीरियड इन विच वी आर एबल टू रिकवर द इन्वेस्टमेंट। नाउ उससे डिसीजन कैसे लिया जाएगा, अभी वो पॉइंट मैं डिस्कस कर रहा हूं। फ्रेंड्स, इन केस ऑफ एनपीवी क्राइटेरिया वी हैव अ रेडीमेड डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया। क्या एनपीवी को 0 के साथ कंपेयर कीजिए, एनपीवी पॉजिटिव है हाँ तो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कीजिए, एनपीवी नेगेटिव है हाँ तो प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कीजिए। दैट इज द वे वी आर सपोज टू टेक डिसीजन। पर यहां पे ऐसा नहीं होगा, यहां पे हमको थोड़ा सा अलग टाइप से डिसीजन लेना है। कैसे, वो मैं आपको समझाता हूं। पेबैक पीरियड क्राइटेरिया से डिसीजन लेने के लिए, लिसन केयरफुली, पेबैक पीरियड क्राइटेरिया से डिसीजन लेने के लिए वी शुड बी हैविंग एडिशनल इंफॉर्मेशन। हमको एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या चाहिए? वी रिक्वायर द एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट स्टैंडर्ड पेबैक पीरियड। इसका मतलब ये है दैट से वी रिक्वायर द एडिशनल इंफॉर्मेशन कि हमको कितने टाइम पीरियड में पैसा वापस चाहिए।
Management of the company may have decided that say we want to recover the investment within 2 years. 1.57 is less than 2, यानी पैसा जल्दी रिकवर हो रहा है तो भी अच्छी बात है, प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करो. सपोज कि स्टैंडर्ड पे बैक पीरियड है 1.5 साल, तो क्या हुआ, पैसा 1.5 साल में रिकवर नहीं हो रहा है, ज्यादा टाइम लग रहा है, तो प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करो. ऐसा करके हमको स्टैंडर्ड पे बैक पीरियड के साथ हमारा एक्चुअल पे बैक पीरियड कंपेयर करना है फॉर डिसीजन मेकिंग. अगर हमारा एक्चुअल पे बैक पीरियड कम है तो प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट किया जाएगा, अगर हमारा एक्चुअल पे बैक पीरियड ज्यादा है तो प्रोजेक्ट को रिजेक्ट किया जाएगा. That is the way we are supposed to take decision for the payback period criteria. Now, importantly, friends, we understand that. Listen carefully what I am going to speak. ये जो 2 साल है, 2.5 साल है, that is supposed to be decided on subjective basis, and that is what we understand is the limitation of the payback period criteria. ये कितने टाइम पीरियड में पैसा रिकवर करने का वो डिसाइड करने के लिए कोई भी एज सच क्राइटेरिया नहीं है. सो दिस इज रिक्वायर्ड टू बी डिसाइडेड ऑन सब्जेक्टिव बेसिस. सो दिस इज द लिमिटेशन ऑफ द पे बैक पीरियड. चलो लेट अस आंसर द क्वेश्चन. इसमें आगे भी थोड़ा डिस्कशन करना है, बट दैट आई एम गोइंग टू से एक्सप्लेन. चलो लेट अस आंसर द क्वेश्चन. Heading right down, payback period. उसमें लिखो फर्स्ट पॉइंट, this is indicating time period in which the company is able to recover investment from the project. Second point, standard payback period should be compared with actual payback period to decide whether to accept investment proposal or not. Full stop. If actual payback period is less, comma, accept the project and vice versa.
Third point, in order to compute payback period, cumulative cash flows are calculated comma year in which cumulative cash flow exceed investment by that year. Investment is recovered. Full stop. अभी हम लोग ये क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं. वर्किंग नोट नंबर 1, calculation of cumulative cash flows. Year cash flows, cumulative cash flows. फर्स्ट ईयर में है 6000 तो क्यूमुलेटिव 6000. सेकेंड ईयर में है 7000 सो क्यूमुलेटिव इज 13000. 13 कैसे आया? 6 + 7. थर्ड ईयर में 8000 तो क्यूमुलेटिव कितना है? 21000. इट इज 13 + 8. This is the way the cumulative cash flow is calculated. हमारा इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपए है जो 1 साल के बाद और 2 साल के पहले रिकवर हो जाता है. तो हमारा पेबैक पीरियड क्या है? इट इज मोर देन 1 ईयर बट लेस देन 2 years. तो फाइनल आंसर ऑफ द पेबैक पीरियड it is 1 year plus investment minus cumulative cash flow by end of first year divided by second year cash flow. क्यों? क्योंकि सेकेंड ईयर में हमारा पैसा रिकवर हो जाता है. दैट इज द वे वी आर रिक्वायर्ड टू मेक द कंप्यूटेशन ऑफ आंसर. वन ईयर प्लस 10,000 minus 6,000 divided by 7,000. So 4 by 7 is 0.5714. This is what the way payback period is found. And friends, ये क्वेश्चन में हमको स्टैंडर्ड पेबैक पीरियड नहीं दे रखा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे कोई भी डिसीजन नहीं ले पाएंगे. Yes. Proceeding further. Now I have a question to all of you. I request you to answer that in the chat box. Suppose कि दो प्रोजेक्ट है A and B. दोनों में इन्वेस्टमेंट है फॉर एग्जाम्पल 100 lakhs का. प्रोजेक्ट A का कैश अक्रूवल है
फर्स्ट ईयर में एन अमाउंट ऑफ रुपीज 60 lakhs, सेकेंड ईयर में 40 lakhs, थर्ड ईयर में 5 lakhs, देन 3 lakhs एंड 2 lakhs. बी प्रोजेक्ट का कैश अक्रूवल है, लेट अस एन अमाउंट ऑफ रुपीज 20 lakhs, 30 lakhs, 50 lakhs, 80 lakhs, 90 lakhs. मेरा क्वेश्चन है सब स्टूडेंट से दैट प्रोजेक्ट ए का पेबैक पीरियड क्या है, प्रोजेक्ट बी का पेबैक पीरियड क्या है, और सपोज कि हमको ये दोनों में से सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट लेने का है, देन माय क्वेश्चन इज कि हम लोग कौन सा प्रोजेक्ट लेंगे बेस्ड ऑन द पेबैक पीरियड क्राइटेरिया. दैट इज माय क्वेश्चन. पुट योर आंसर इन द चैट बॉक्स. Friends, over here apparently we understand कि प्रोजेक्ट ए का पेबैक पीरियड है 2 साल, प्रोजेक्ट बी का पेबैक पीरियड है apparently हम लोग समझ सकते हैं 3 साल. सो बेस्ड ऑन द पेबैक पीरियड क्राइटेरिया जब हमको सिलेक्शन करना है तो डेफिनेटली हम लोग जो प्रोजेक्ट का पेबैक पीरियड कम होगा उसको सिलेक्ट करेंगे. दैट इज प्रोजेक्ट ए ओवर हियर. Now I want you to tell me that say do you find any limitation of payback period criteria taking into account this example. Friends, यहाँ पे हम लोग ऐसा समझ सकते हैं that say importantly जो भी बाद का परफॉर्मेंस है, एक बार हमारा पैसा रिकवर हो जाए उसके बाद का परफॉर्मेंस उसको कंसीडर नहीं किया जाता है. We understand that say what will be the cash flow once you recover the investment is ignored over here. This is what we understand is the important limitation of the payback period criteria apart from the limitation of ignoring time value of money. यहाँ पे हम लोग क्या देख सकते हैं, प्रोजेक्ट ए का पेबैक पीरियड भले ही कम है पर बाद में देखो कितना कम पैसे वो जनरेट करता है. बी का पेबैक पीरियड थोड़ा सा ज्यादा है पर बाद में उसका ह्यूज कैश इनफ्लो है. ये चीज को इग्नोर किया जाता है. सो वी अंडरस्टैंड दैट से द पेबैक पीरियड क्राइटेरिया का बेसिकली 3 लिमिटेशन है. पहला लिमिटेशन ये है इट इग्नोर्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी. एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ द कैश फ्लोस को लेके हम लोग पेबैक पीरियड फाइंड करते हैं. दूसरा, इट इग्नोर्स द कैश फ्लोस अकरिंग आफ्टर द पेबैक पीरियड क्राइटेरिया इन डिसीजन मेकिंग. और तीसरा लिमिटेशन ये है कि स्टैंडर्ड पेबैक पीरियड कैलकुलेट करने के लिए कोई भी उनके पास से कॉन्क्रीट वैल्यूज नहीं है, उनके पास कोई भी कॉन्क्रीट लाइक एक्सप्रेशन नहीं है दैट्स व्हाई दिस इज द स्टैंडर्ड पेबैक पीरियड. सो दीज आर द 3 लिमिटेशंस ऑफ पेबैक पीरियड क्राइटेरिया. सो लेट अस आंसर द क्वेश्चन. हेडिंग राइट डाउन. लिमिटेशन ऑफ payback period criteria. उसमें लिखो 1, it ignores concept of time value of money. Full stop. It ignores cash flows after payback period for decision making. Third, there is no proper method to determine
स्टैंडर्ड पेबैक पीरियड। ऐसा हम लोग समझते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है जिसमें पूछा है कैलकुलेट अ डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। फ्रेंड्स, तो ये नाम ही बताता है कि हमको क्या करना है। इंस्टेड ऑफ सिंपल पेबैक पीरियड वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। यानी क्या किया जाएगा, इंस्टेड ऑफ टेकिंग द एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ द कैश फ्लो, डिस्काउंटेड कैश फ्लोज को लेके हमें पेबैक पीरियड फाइंड करना है। सो प्लीज राइट ऑन हेडिंग डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। Please write on heading discounted payback period. उस पर लिखो फर्स्ट पॉइंट, it is calculated similar to payback period, comma, with the only change that it considers time value of money. Second point, instead of absolute amount of cash flow, we take present value cash flow for calculation. फ्रेंड्स, बाकी सब सेम रहेगा. It is indicating the time period in which we are able to recover the investment. It is required to be compared with the standard payback period to decide whether the project should be accepted or not. Between two mutually exclusive investment proposal, project having lower payback period, that is lower discounted payback period, will be selected. It ignores the cash flows occurring after the payback period for the purpose of decision making. और आखिरी में we understand that the determination of the standard payback period is very subjective. तो बाकी सब सेम रहेगा. I request all of you to do calculation of the discounted payback period and put your answer in the chat box. So let us read this. Let us calculate the answer. Working note number 1. Calculation of cumulative present value cash flow. Please write an answer along with me. कॉलम नंबर 1 होगा ईयर, कॉलम नंबर 2 होगा कैश फ्लोस, थर्ड कॉलम प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट 25%, प्रेजेंट वैल्यू कैश फ्लो एंड क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू कैश फ्लो. फर्स्ट ईयर का कैश अक्रूवल है 6000, सेकेंड ईयर का है 7000, थर्ड ईयर इट is 8000. उसको प्रेजेंट वैल्यू टर्म में डिस्काउंट किया जाएगा 0.8, 0.64, 0.51. इस पर हमको क्वेश्चन में रेडीमेड फैक्टर्स दे रखा है फ्रेंड्स, सो वी डोंट हैव टू कैलकुलेट द सेम. फाइन. प्रेजेंट वैल्यू कैश फ्लो, उसमें क्या किया जाएगा 6000 into 0.80, that comes to 4800. सेकेंड ईयर में 7000
इंटू 0.64 4480। थर्ड ईयर में 8000 इंटू 0.512, so it comes to 4096। उसके बेसिस से क्यूमुलेटिव वैल्यू फर्स्ट ईयर में 4800, सेकेंड ईयर में 4800 प्लस 4480, that comes to 9280। थर्ड ईयर में 9280 प्लस 4096, सो 13376। ऐसा करके हमको क्यूमुलेटिव कैश फ्लो फाइंड करना है। हमारा इन्वेस्टमेंट कब तक रिकवर हो जाता है? 2 साल के बाद और 3 साल के पहले। ऐसे कैसे पता चला सर? क्योंकि ये 10,000 रुपए जो है दैट इज फॉलिंग बिटवीन दिस टू, सो द आंसर इज ग्रेटर देन 2 years बट लेस देन 3 years। ओके, वंस वी मेक दिस कैलकुलेशन, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? विल मेक द कैलकुलेशन लाइक दिस, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। उसका कैलकुलेशन होगा 2 years plus we understand it's the investment minus cumulative cash flow by end of second year divided by present value cash flow for the third year। This is the way we are required to calculate the answer। Okay, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे 2 years प्लस 10,000 माइनस सेकेंड ईयर एंड तक कितना रिकवर हो गया? 9280। तो जो भी न्यूमरेटर है ना, उतना पैसा भी रिकवर करने का बाकी है जो हम लोग थर्ड ईयर के बिजनेस से रिकवर करेंगे। थर्ड ईयर का बिजनेस कितना है? 4096। सो यूज अ कैलकुलेटर। 10,000 minus 9280 यानी 720। 720 डिवाइड बाय 4096 इज 0.1757, तो 18 कर देता हूं मैं, सो 2.18 years। ऐसा करके हम लोग आंसर कैलकुलेट करेंगे। फ्रेंड्स अगेन बाकी का पॉइंट सेम है, इसलिए मैं लिखवा नहीं रहा हूं डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड में, क्योंकि बाकी सारा पॉइंट यहां पे सेम है। फ्रेंड्स एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा, जब भी हमको पेबैक पीरियड पूछा है ना, तो हमको सिंपल पेबैक पीरियड ही फाइंड करने का। जब हमको डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड पूछा है, तभी हमको टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कॉन्सेप्ट को कंसीडर करना है। थर्ड क्वेश्चन है जिसपे फाइंड करना है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। उसको एक दूसरा नाम भी दिया गया है डिजायरेबिलिटी फैक्टर। उसको और एक नाम भी दिया गया है called benefit cost ratio। Like that, it has 3 names: PI, desirability factor, or benefit cost ratio। Everybody is requested to pay attention once again। Third question में पूछा है that you are required to compute the profitability index। उसको फ्रेंड्स एक दूसरा नाम दिया जाता है desirability factor DF। उसको एक दूसरा नाम भी दिया जाता है जिसका नाम है BCR, बेनिफिट कॉस्ट रेशियो। आपको कुछ लिखना नहीं है, लेट मी एक्सप्लेन यू फर्स्ट ऑफ ऑल। फ्रेंड्स इसका कैलकुलेशन कैसे होता है पता है? इसका कैलकुलेशन होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश एंड फ्लो डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट। ऐसे इसका कैलकुलेशन होता है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश एंड फ्लो कितना है फ्रेंड्स? वी अंडरस्टैंड दैट से 4800 प्लस 4480 प्लस 4096।
4800 plus 4480 plus 4096 whole divided by 10,000. So what is the value of the numerator? The value of the numerator is 13376 divided by 10,000. ऐसा करके इसका कैलकुलेशन होता है एंड द आंसर इज 1.3376. अच्छा, ये 1.3376 क्या बताता है वो अभी मैं आपको समझाता हूं. मैंने कैलकुलेशन समझाया, अभी ये क्या बताता है वो मैं आपको समझाता हूं. फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोग एक रेशियो पढ़ते हैं जिसका नाम है करंट रेशियो. करंट रेशियो है 1.60. इसका मतलब क्या है कि करंट असेट्स इज 1 रुपी 60 पैसे फॉर एवरी 1 रुपी ऑफ करंट लायबिलिटी. इसका मतलब ऐसा होता है जिसका कैलकुलेशन होता है करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज. एग्जैक्टली द सेम वे you make the calculation of the PI. PI is 1.3376. That is present value of the cash inflow upon investment. तो ये क्या बताता है? What is the present value of the cash inflow for every 1 rupee of investment? 1 रुपए के इन्वेस्टमेंट के सामने हमारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश इनफ्लो कितना है वो ये बताता है. That is the way so we make the calculation of the PI. तो पीआई क्या बताता है? व्हाट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश इनफ्लो फॉर एवरी 1 रुपी ऑफ इन्वेस्टमेंट. आई वांट समबडी ऑफ यू टू राइट इन द चैट बॉक्स दैट व्हाट डू यू थिंक. अगर ये प्रोजेक्ट का पीआई 1.3376 है तो क्या हमको प्रोजेक्ट लेना चाहिए? राइट इन द चैट बॉक्स. वी अंडरस्टैंड दैट से सिंस पीआई इज मोर देन 1, the project should be accepted. Simple. PI क्या बताता है? What is present value of cash inflow for every 1 rupee of investment? Present value of the cash inflow is more than 1. The project should be accepted and vice versa. ऐसा हम लोग समझते हैं. So write down heading PI Profitability Index / DF Desirability factor / BCR Benefit Cost Ratio. उस पर लिखो पहला पॉइंट, it is calculated using following formula. So write down the formula. PVCI upon investment. Second, it indicates what is present value of cash inflow for every 1 rupee of investment. Third, decision making. उस पे लिखो PI is greater than 1, then accept the project. PI is less than 1, reject the project. PI is equal to 1, then you are indifferent whether to accept the project or not. Now friends, let us make calculation of the answer. Calculation of PI. उसमें लिखो
PVCI upon investment. What is the present value of the cash inflow? We understand that say the first year end it is 4800, second year 4480 plus third year 4096, whole divided by investment 10,000. So 13376 upon 10,000. It is 1.3376. तो पीआई एक से ज्यादा या कम है, एक से ज्यादा है, तो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करो. सो द डिसीजन इज PI exceeds 1. So, accept the project. ऐसा करके हम लोग डिसीजन ले सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, वी आर रिक्वायर्ड टू मेक द कैलकुलेशन ऑफ NPV इंडेक्स. Everybody is requested to pay attention. Do not write anything. फोर्थ क्वेश्चन में पूछा है, you are required to compute NPV index. अभी NPV इंडेक्स को सबसे पहले कैलकुलेट कैसे किया जाएगा वो मैं आपको समझाता हूं. I request all of you to pay attention. NPV इंडेक्स, उसका कैलकुलेशन कैसे होता है? It is NPV upon investment. NPV का कैलकुलेशन कैसे होता है वो हमने अभी समझा है. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश इनफ्लो माइनस इन्वेस्टमेंट अपॉन इन्वेस्टमेंट. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश इनफ्लो कितना है? 13376 माइनस 10,000 डिवाइडेड बाय वापस 10,000. So 3376 upon 10,000. So we can say that's a 0.3376 or we can say that it is 33.76 पैसे. ना जैसे पीआई बताता है कि 1 रुपए के इन्वेस्टमेंट के सामने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश इनफ्लो कितना है, वैसे ही एनपीवी इंडेक्स ये बताता है व्हाट इज द एनपीवी फॉर एवरी 1 रुपी ऑफ इन्वेस्टमेंट. ऐसा करके एनपीवी इंडेक्स का कैलकुलेशन किया जाता है. पीआई ये बताता है व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश इनफ्लो फॉर एवरी 1 रुपी ऑफ इन्वेस्टमेंट. वैसे एनपीवी इंडेक्स ये बताता है व्हाट इज द एनपीवी फॉर एवरी 1 रुपी ऑफ इन्वेस्टमेंट. आई रिक्वेस्ट यू टू राइट इन द चैट बॉक्स कि अगर ये प्रोजेक्ट का एनपीवी इंडेक्स 33.76 है, दैट इज 0.3376 है, तो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे. फ्रेंड्स, वी अंडरस्टैंड दैट एनपीवी इंडेक्स इज 0.3376. वो क्या बताता है? इट इंडिकेट्स व्हाट इज द एनपीवी फॉर एवरी 1 रुपी ऑफ इन्वेस्टमेंट. If at all on 1 rupee you get 0.3376, means you are getting something positive. Yes, so in that case you should accept the project. तो जो हमारा डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया एनपीवी के लिए होता है, एग्जैक्टली द सेम डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया हमारा एनपीवी इंडेक्स के लिए होता है. अगर एनपीवी इंडेक्स पॉजिटिव है तो प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करो, अगर एनपीवी इंडेक्स नेगेटिव है तो प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करो. ऐसा हम लोग बोल सकते हैं. Now write down heading NPV index. उसमें लिखिए फर्स्ट पॉइंट, it is indicating NPV of the project, comma
for every 1 rupee of investment made in the project. Second point, acceptability criteria and formula of NPV index is as under. So write down formula. NPV upon investment. ऐसा करके एनपीवी इंडेक्स फाइंड किया जाता है और डिसीजन एनपीवी इंडेक्स को 0 के साथ कंपेयर किया जाता है। अगर एनपीवी इंडेक्स पॉजिटिव है then in that case we accept the project. अगर वो नेगेटिव है we reject the project. अगर वो 0 है then you are indifferent whether to accept the project or not. ऐसा करके हमको डिसीजन लेना है। रडन आंसर एनपीवी इंडेक्स का आंसर लिखते हैं। This note will be for understanding. NPV upon investment. NPV कितना है? Present value of the cash inflow minus investment is NPV upon investment. ऐसा किया जाएगा। हमने अभी ऊपर कैलकुलेट किया है 13376 minus 10,000 whole divided by 10,000. Double 376 upon 10,000. Point 3376. This is the way NPV for every 1 rupee of investment can be found, and as it is positive, the project should be accepted. Decision. As NPV index is positive, comma, accept the project. ऐसा करके हम लोग डिसीजन लेंगे। तो पूरे क्वेश्चन का एक छोटा सा समरी। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है दैट्स ए पेबैक पीरियड that is indicating the time period in which we are able to recover the investment. So it is 1.57 years. हमने ऐसा समझा कि स्टैंडर्ड पेबैक पीरियड के साथ एक्चुअल पेबैक पीरियड कंपेयर किया जाता है टू डिसाइड वेदर द प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड और नॉट। इट इग्नोर्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इट इग्नोर्स द कैश फ्लोज अकरिंग आफ्टर द पेबैक पीरियड, और स्टैंडर्ड पेबैक पीरियड जो है वो थोड़ा सब्जेक्टिव है डिसाइड करने का। These are the limitations that we have. Discounted payback period is introduced to remove the limitation of the payback period that it ignores time value of money. बाकी सब absolutely same है। हमको cumulative cash flow का जो कॉलम है उसमें देखने का कि हमारा इन्वेस्टमेंट कब तक रिकवर हो जाता है, and accordingly we are required to form the equation.
नेक्स्ट क्वेश्चन में पीआई फाइंड करना है, उसको डिजायरेबिलिटी फैक्टर या आईआरआर दैट इज बीसीआर भी बोला जाता है। उसका कैलकुलेशन होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश इनफ्लो अपॉन इन्वेस्टमेंट। 10,000 के सामने हमको क्या मिलता है 13376, so what we receive is 1.3376 which is more than 1, so the project should be accepted। हमको 1 रुपए के सामने कितना मिलता है ना वो हमको देखने का है। अगर 1 रुपए के सामने हमको 1 रुपए से ज्यादा मिलता है तो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना चाहिए। That is what we understand। NPV index is very similar to the profitability index, जिसपे हम लोग ये कैलकुलेट करते हैं what is the NPV for every 1 rupee of investment। अगर ये पॉजिटिव है तो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करो, नेगेटिव है तो रिजेक्ट करो, और जीरो है तो यू आर इंडिफरेंट। ऐसा करके हमको आंसर करना है।